Dimensions. ये वर्क हो रहा ना ओके मैम थोड़ा और ये जरा लेंथ का होना था बिकॉज वहां तक बोर्ड को ओके ठीक so assalamu alaikum to everyone. Okay. So we started the last class units and measurements chapter. We solved few important questions like NEET or case set questions we have solved, and we'll continue the same topics today also. Have you done the questions? All the questions last class I have given some questions to practice. Have you done those questions? Not given. Okay. So today's topic I'm going to discuss about dimensions. Okay. So now what is dimension, right? So for a given physical quantity, we are writing in the form of fundamental units. Okay. So dimension is nothing but we are writing in the form of equations. In terms of equations for a okay. In terms of equation for a given physical quantity is called dimensions. Okay. Like example, we'll write if I write speed. Okay. So what is the formula for speed? Distance upon time, correct? Speed का formula is distance upon time. Okay. So here v which is equal to x by t. How to write this dimension? So we have to write in the square bracket. जो भी like physical speed is the physical quantity. For this physical quantity, we are writing in the form of dimension. So dimension means you have to write in the square bracket. Okay. So which is equal to mass, length, and time. Okay. So this is called as dimensional equation. Okay. So in terms of equation for a given physical quantity, so this velocity or speed is the physical quantity. This physical quantity we are writing in terms of dimensions. Okay. So mlt. So what is x here? Distance. How can we measure the distance? Okay. What is the distance unit? Okay, length. So here length is one, length dimension is okay, length dimension is one, and time dimension. Okay. So if you take this time, it becomes -1, correct? So mass dimension is 0. Okay, see I have written one formula here. This formula or this equation is called as dimensions. Like that we have so many physical quantities are there. Like if I give another example, uh, okay, we can take an example of force. Okay, force is a physical quantity. The force which is equal to mass into acceleration. Okay, so F which is equal to, okay, so mass. Okay, so M is the mass. What is acceleration? Meter second power -2, correct? So capital M is mass and small m is meter. Okay, this meter per second square, meter meter second power -2 is the unit of acceleration. This is the unit of acceleration. So I want to write in the dimension form or dimensional equation. How I write this? So here force is the, okay, so this is only the physical quantity, but the physical quantity I'm writing in form of the bracket, that is called as dimensional method. So mass, length, and time. Okay, so mass dimension is 1, length dimension is 1, second is the unit of time. Second is the unit of time, so it becomes -2, correct? Look at this. The given force is a physical quantity,
that physical quantity I'm writing in terms of dimension. Clear? So like that we have, there are the many formulas are there, like speed, velocity, acceleration, pressure, power, work, energy, correct? So we have there are many physical quantities are there. All these physical quantities we are writing in terms of dimension. Okay, so today class we are going to discuss about dimensions and how we are writing the different physical quantity in terms of dimension method. Clear? Got it? Okay, you want to take down this? Okay, only write speed and you can take down this formula. Okay, done. Okay, so we'll solve the questions. Okay, so question number one, the topic is dimensions. The dimension of mass is zero in the following physical quantities. Okay, the dimension of mass is zero in the following. PQ means understood is a physical quantity, because if I write completely it will take some time, so I'll write shortcut. PQ means what? Physical quantity. Okay, the dimension of mass is zero. क्या पूछने क्वेश्चन में? Okay, जो भी फिजिकल क्वांटिटी देकर ही, तो मास का डायमेंशन क्या है? जीरो. Okay, so this is the mass. Okay, mass dimension is zero, मतलब mass का power zero कर बोल को पूछ रही. Okay, the option is surface tension. Option A is surface tension. Option B is coefficient of viscosity. Option C is heat. Yes. Option D is specific heat capacity. Okay, students. Okay, so they have given four options. Okay, so in the four following options, in which physical quantity have zero dimension, that we have to find. Okay, how to find out this? We have the equations, we have formulas, right? Surface tension, coefficient of viscosity, heat, and specific capacity. For all these physical quantities we have formula. Okay, so first surface tension, first one is, okay, surface tension. So what is the formula for surface tension? I think you people have studied in mechanical properties of fluids in first year, volume 2 chapter you studied. Okay, what is the surface tension formula? Surface tension का formula क्या आता है? Okay, surface tension is force, surface tension which is equal to force per unit length. Force per unit length, तो ये फार्मूला बनता है. ओके, अब यहाँ पर मास बन सकता है. अब फोर्स को हम कैसा लिखते हैं? हाउ कैन वी राइट फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन लेंथ. अब इसमें मास तो है, तो ये तो जीरो नहीं हो सकता. ओके, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. समझ में आ रहा है? ओके, अब इसमें डायमेंशन में देखो मास आ रहा है, बट हमने क्वेश्चन में क्या लिखना हमें? तो मास जीरो होना. ओके, लुक एट दिस. तो मास का डायमेंशन क्या होना? जीरो होना होना. सो एक का तो वी हैव अ मास, सो ये तो रॉन्ग ऑप्शन. नेक्स्ट वी कैन टेक बी. तो बी में क्या आ रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ओके, so coefficient of viscosity F which is equal to eta A dV by dx. This is the formula.
Okay, this is coefficient of viscosity. Okay, so here what is the symbol is called as, इस symbol को क्या बोलते हैं हमें? Eta is the Greek symbol. Okay, it is a constant, it is a coefficient constant, viscosity constant. What is, you know what is the viscosity, right? So viscosity क्या होता है? Like viscosity is it is a property of a fluid in which the friction can be takes place between the adjacent side of the fluid. जैसे कि like friction force होता है. अब जैसे कि chair is there, if you want to pull the chair, तो इसके ऊपर कौन सा force लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? अब कुछ भी बॉडी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। ऐसा क्या होता है? फ्लूइड के अंदर एक फोर्स लगता है, जैसे कि अब हमें क्या कहते हैं, लाइक पानी में या कुछ भी लाइक एक सॉल्यूशंस को मिक्स कर डाले, तो इस लिक्विड में सॉल्यूशन में क्या लगता है? देयर इज अ विस्कस फोर्स लगता है। समझ में आ रहा है? द विस्कस फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स, ओके, द फोर्स व्हिच टेक्स प्लेस बिटवीन द एडजेसेंट साइड ऑफ द फ्लूइड। ओके, जैसे एग्जांपल, अब यहाँ पर फ्लूइड होता है, ओके, लाइक एग्जांपल दिस इज द फ्लूइड लेयर, एक फ्लूइड का लेयर। ओके, so here we can take another layer of the fluid. Okay, देखो ये दोनों लेयर के बीच में, ये दोनों लेयर के बीच में क्या होता है? एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स, लाइक एग्जांपल यू कैन टेक ए हनी। अब जो शहद रहता है, तो शहद को भी पानी को भी कंपेयर करें तो शहद में विस्कस ज्यादा रहता है, तो पानी में क्या होता है? द वाटर विल फ्लो वेरी इजीली। तो कहीं को, बिकॉज द विस्कस फोर्स इज वेरी लेस इन द वाटर। ओके, बट विस्कस फोर्स मोर इन हनी। यू कैन टेक सम अदर ऑयल लाइक कोकोनट ऑयल, और यू कैन टेक द कुकिंग ऑयल, ऐसा कुछ भी ऑयल लेने से उसमें क्या होता है? लाइक उसका विस्कोसिटी अलग रहता है। समझ समझ में आ रहा है क्या? तो भाई तुम्हें शुगर लेको, शक्कर लेको पानी में, उससे अब हमें शीरा बना दी, तो उसका विस्कोसिटी अलग रहता है। सर नो, तो अलग अलग फ्लूइड का विस्कोसिटी अलग रहता है। सो व्हाट इज विस्कोसिटी? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड, ओके, which oppose the relative motion between the two adjacent layer of the fluid। मतलब ये फ्लूइड का जो मतलब नीचे का लेयर रहता है, ऊपर का लेयर रहता है, इस दोनों लेयर के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगकर रहता है। तो उसकी वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है? फ्लूइड जल्दी आगे नहीं जाता। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल हनी। ओके, अभी एक हनी को इंक्लाइन द टू सरफेसेस, एक सरफेस के ऊपर हनी को ऐसा डालो, दूसरे सरफेस को वाटर पे डालो, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाती हैं? दे गो फास्टर। बट हनी क्या हो जाता है? इट विल कम वेरी स्लोली। तो व्हाट इज द रीजन? तो हनी के मॉलिक्यूल्स के लेयर में क्या रहता है? फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा रहता है, फ्लूइड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा रहता है, तो उस फोर्स को व्हाट वी कॉल्ड एज विस्कस फोर्स। ओके, अब उसका फार्मूला बनता है, सो हियर ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, यहाँ पर जो रहता नहीं, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ईटा। अब हमें इसका फार्मूला बनाना, हाउ फाइंड आउट दिस फार्मूला? ओके, यहाँ पर देखो, सो यू कैन टेक दिस force upon area। okay, force upon area divided by dv by dx। okay, dv by dx which is equal to eta, correct? so, देखो ये फार्मूला को कैन आई राइट लाइक दिस, बट हम ना होना सो क्या? ओके, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये आपको फोर्स का फार्मूला, कौन सा? विस्कस फोर्स का फार्मूला ये, बट ये फार्मूला कौन सा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, अब सी हियर, यहाँ पर देखो फोर्स आ रहा है तुमना। ओके, सो वी हैव ए फोर्स, फोर्स आने से मास आ जाता है यहाँ पर, तो ये आल्सो, दिस आल्सो इज रॉन्ग ऑप्शन। समझ में आ रहा है? सो नेक्स्ट वी कैन टेक हीट। ओके, सी ऑप्शन। सो व्हाट इज हीट? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो हीट को कौन से सिंबल से हमें रिप्रेजेंट करती हैं? क्यू सिंबल। ओके, हीट इज, ओके, क्यू, वी आर यूजिंग क्यू। सो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। करेक्ट? क्यू का फार्मूला क्या बनता है? क्यू विच इज इक्वल टू डायरेक्टली, बिकॉज इफ यू टेक एनी सब्सटेंस, कुछ सॉलिड रहते, लिक्विड रहते, अब उसे हमें क्या करती है? हीट सप्लाई करती है। सो सपोज इफ द मास ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस, अब जैसे एग्जांपल है, अब एक 500 ग्राम को पानी को बॉईल करती हैं, एक आधा लीटर के पानी को बॉईल करती हैं, तो उसे क्या करना पड़ता है? हीट सप्लाई करना पड़ता है। इंस्टेड ऑफ 500 ml यू कैन टेक 2 लीटर, तो मास का क्वांटिटी ज्यादा होगा, तो ज्यादा क्वांटिटी रहने की वजह से क्या हो जाता है तुम्हारा? ये हीट भी ज्यादा देना पड़ता है। व्हाट इज माय पॉइंट? अब तुम्हें 1 kg चावल को बॉईल करते हैं बोले तो you need the like you need the 1000 joules of heat energy. If you want to boil the like 5 kg of rice, how much you want? So definitely the heat is more. तो mass, because mass जब बढ़ जाता है तो heat की quantity भी बढ़ जाती है। Yes sir, no? When the mass is increases, the amount of heat also supplied to the substance is increases. Okay, और temperature भी क्या हो जाता है? Temperature भी automatic में heat करे तो temperature भी बढ़ जाता है। तो heat is directly proportional to mass and difference in temperature। Okay, so I'm going to write this q which is equal to cm dt, correct? So what is c here? C is the specific heat capacity, is the constant। c क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? specific capacity। अब यहाँ पर देखो इसका यूनिट लिखना, अब देखो यहाँ पर मास आ गया यहाँ पर भी,
फार्मा में यहाँ पर भी मास आगा, तो मास जीरो हो सकता है क्या? यहाँ जीरो हो सकता है, मास का डायमेंशन बन रहा ना यहाँ पर। ओके, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन होगा। तो बचा हुआ कौन सा ऑप्शन? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, अब देखो एज फार्मा में से वी टेक दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, व्हाट इज सी? इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब सी होना अगर बोले तो क्यू एम डी टी, क्यू एम डी टी। व्हाट इज क्यू? हीट, सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, अब इसे क्यू को मैं कैसे लिख सकूं? एनर्जी। सो एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। एनर्जी और वर्क डन दोनों बेखिच हो सकता है। एनर्जी का यूनिट भी एनर्जी और वर्क डन। ओके, एनर्जी इज इक्वल टू, ओके व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज वर्क डन? एनर्जी किसे बोलते हैं? एनर्जी इज एबिलिटी टू वर्क, मतलब जो भी कुछ काम करने का जो ये रहता है उसे हमें क्या बोलते हैं? सो एनर्जी और वर्क दोनों बेखिच रहता है। ओके, सो आई कैन राइट हियर एम डी टी। ओके, सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर वर्क? वर्क का फार्मूला क्या बनता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपन एम डी टी। करेक्ट, समझ में आ रहा है? वर्क डन, वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगेन फोर्स का फार्मूला क्या बनता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एक्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास इंटू डी टी। देखो यहाँ मास मास कैंसिल हो जा रहा है, तो इसका डायमेंशन क्या बन रहा है? सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है? सो लाइक दैट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द फार्मुलास एंड वी हैव टू फाइंड आउट विच डायमेंशन द मास इज जीरो। गॉट इट? यस, नोट डाउन। खाली तुम्हें ये फोर्थ ऑप्शन, ओनली यू टेक डाउन द फार्मुला, यू डोंट राइट एवरीथिंग। ओके, सरफेस टेंशन का फार्मुला और विस्कस फोर्स का फार्मुला, हीट एनर्जी का फार्मुला। ओके, यू टेक डाउन ओनली द फोर फार्मुलास। ये पूरा सॉल्व कर लेगा तो टाइम लग जाता है। ओनली यू टेक डाउन दिस फार्मूला, सिर्फ ये फार्मूला लिख ले तो बस तुम्हें, बाकी की चीजें तुम्हें खुद ही से नोट कर ले सकती। तो भाई एक बार तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ गए अगर बोले तो फार्मूला में से क्या करना तुम्हें? उसके यूनिट्स को लिखना। तो यूनिट्स को लिखो, कंपेयर करो कौन सा ऑप्शन सही है, बोल को विल गेट द आंसर। ओवर okay, we'll go to the next question. Yes or no? Open your mouth and tell. Oh. Okay, question number 2. The physical quantity having the dimensions. The physical quantity having dimensions ओके, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द डायमेंशंस। ओके, अब यहाँ पर चार ऑप्शन देकर ही, तो ये चार ऑप्शन में से एक कौन सा सही है, मतलब फोर ऑप्शन में से जो डायमेंशन देकर नहीं कौन सा सही है बोल को फाइंड आउट करना। सो वन इज रेजिस्टेंस। ओके, सो इसे रेजिस्टेंस आर, ऑप्शन बी इज resistivity, what is the symbol of resistivity? What is the symbol of resistivity? Yes, rho. Okay, तुम बैठ को रोती ना वो नहीं। ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल, what is the symbol of conductivity? Sigma.
Okay, electrical conductivity. Option D is electromotive force. Okay, तो पहले क्या था, they have given the physical quantities and we have to find out the dimension. अब क्या देकर ही, डायमेंशन देकर ही, तो उसका फिजिकल क्वांटिटी कौन सा, क्लियर माय पॉइंट. ओके, सो फर्स्ट व्हाट इज द फॉर्म ऑफ अ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू वी बाई आई. आर इक्वल टू वी बाई आई. ओके, सो व्हाट इज आई, इज करंट. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर. ओके, अब वी हैव टू फाइंड आउट वोल्टेज. ओके, तो यहां पर करंट का यूनिट क्या बनता है, एम्पियर. ये तो हम ना, वी नो दैट. अब यहां पर क्या है, वी हैव वी. ओके, सो व्हाट इज वी, वोल्ट. वी का दिस क्या, वोल्ट. अब ये वोल्ट हमें कैसा लिख सकते हैं, वोल्ट वी कैन राइट दिस. ओके, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वी का फार्मूला क्या बनता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. अगेन व्हाट इज वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, व्हाट इज क्यू, चार्ज. चार्ज का यूनिट क्या बन सकता, चार्ज का यूनिट आपका कूलम, बट इसे हमें फंडामेंटल यूनिट में लिखना. सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर करंट, आई इक्वल टू क्यू बाई टी. अब क्यू होना अगर को बोले तो आई इंटू टी. सर नो, अब क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं हमें, आई इंटू टी. क्लियर. सो आई फॉर करंट एंड टी फॉर टाइम. ओके, अब अगेन फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, डायमेंशन, मास इंटू एक्सेलरेशन. अब मैं इसका पूरा डायमेंशन लिखता हूं, देखो, मास इंटू मास का डायमेंशन एम, एक्सेलरेशन का डायमेंशन मीटर. यस, मीटर, मीटर पर एक्सेलरेशन सेकंड स्क्वायर. तो मीटर किस में मेजर करती, लेंथ से. ओके, सेकंड स्क्वायर किससे मेजर करती, टाइम. सो टी पावर -2 हो जाता है, बिकॉज सेकंड स्क्वायर नहीं, सेकंड पावर -2 है तो टाइम से मेजर करते हैं. ओके, यहाँ पर एक्स है, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, मीटर में मेजर करते हैं. तो ऑलरेडी यहाँ पर एक मीटर है, तो ये स्क्वायर हो जाता है, इट बिकम स्क्वायर. ओके, अगेन तो यहाँ पर व्हाट इज आई, yes, ampere, and again t, time. Okay, now you take here, if you rearrange this one, so v which is equal to, ये पूरा क्या बनता है, okay, mass length square. okay, यहाँ पर +1 है, सो ये +1 ऊपर गया तो -1 हो जाता है. सो t पावर -3, t पावर -3, और एम्पियर ऊपर गया तो -1. ओके, अब देखो यहाँ पर यस, मैच नहीं हो रहा है, नहीं, बट इट इज वोल्ट, बट हम होना सके, आर का फार्मा होना समझना. समझ, व्हाट इज आर, वी बाई आई. सो आर विच इज इक्वल टू व्हाट इज वी, एम, मास का डायमेंशन 1, एल स्क्वायर, टी पावर -3, एम्पियर -1 डिवाइड बाई ये पावर 1. तो ये पावर ऊपर चलेगा तो ये पावर -2 हो जाता है. ओके, यहां पर क्या हो जाता है, दिस बिकम एज -2. समझ में आ रहा है, दिस बिकम एज -2. ओके, अब यहां पर देखो, यहां पर +2 आ रहा है, यहां पर +3 है. ये भी ऑप्शन, दिस आल्सो नॉट, मतलब ये भी सही ऑप्शन नहीं है, करेक्ट. अब डायमेंशन का फार्मूला देखो, व्हाट इज द डायमेंशन, m पावर 1, तो हम -1 है, तो इट इज द रॉन्ग. ओके, ऑप्शन ये नहीं बनता. नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी. सो व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या बनता है. ओके, यस, रेजिस्टिविटी विच इज इक्वल टू आर ए बाई एल. तो ये फार्मूला कैसा आया, सो ओके, सो रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, directly proportional to length, and resistivity is inversely proportional to area. okay, resistivity directly inversely proportional. अब इसे दो को भी कंबाइन करके लिखे तो resistivity is directly proportional L by A हो जाता है. इसे प्रोपोर्शनलिटी को हटाना अगर तो क्या करना, सॉरी ओके, देखो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी नहीं है, रेजिस्टेंस. ओके, सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. अब यहाँ पर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A हो जाता है. अब इसे हमें हटाना का तो क्या करना, सो R विच इज इक्वल टू रो L by A हो जाता है. अब हम रेजिस्टिविटी होना अगर बोले तो रो विच इज इक्वल टू RA by L. ओके, सो दिस इज द फार्मूला वी हैव टेकन. देखो, डायरेक्टली वी हैव टेकन. ओके, बट जब तुम्हारा सेकेंड ईयर में आती है पूरा लाइक रेजिस्टिविटी का फार्मूला, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी स्टडी इन द थर्ड चैप्टर. करंट इलेक्ट्रिसिटी में
So what is mean by resistance, resistivity, electric current, ये पूरा इसके डिटेल में आपको विल स्टडी इन सेकंड ईयर थर्ड चैप्टर में स्टडी कर सकते हैं। बट आपको क्या रख लेते, यू रिमेंबर दिस फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला फॉर रेजिस्टिविटी, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। ओके, अब हम ऑलरेडी रेजिस्टर का कैलकुलेट करको ही, करेक्ट, ऑलरेडी रेजिस्टर का हमें क्या करको ही, हियर -2 ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, राइट। अब इसे क्या करो, विच इज इक्वल टू डायमेंशन में लिखो इसे। अब क्या हो जाता है रेजिस्टिविटी का, देखो ये क्या लिखना, व्हाट इज ए इज एरिया, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया, लेंथ स्क्वायर, लेंथ को स्क्वायर कर लेना। अब यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर है, इट बिकम 4, तो m पावर 1 l पावर 4, ओके, t पावर -3 a पावर -2, यहाँ लेंथ है तो ये लेंथ कैंसिल है तो क्यूब हो जाता है ये। लुक एट दिस ऑप्शन, अभी भी नहीं बन रहा है, -1 यहाँ -1 -3 रहना था, +3 -2, मतलब साइन ऑपोजिट है। ओके, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन, क्लियर। ओके, नेक्स्ट विल टेक द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सो कंडक्टिविटी आपको, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, मतलब जो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल उल्टा है। अब देखो उल्टा था तो आंसर आ जाता है। अब देखो पूरा डायमेंशन बराबर है, 1 3 1 3 -3 -2, अब खाली क्या चेंज होना, सुनना, साइन चेंज होना। सो अब कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या बनता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब इसे 1 बाई, मतलब ये ऊपर लेकर क्या हो जाता है, अब यहाँ 1 डिवाइड में रहता है, ऊपर लेकर तो क्या होता है, पूरा प्लस है सो माइनस होता है, माइनस है सो प्लस हो जाता है। सो यहाँ पर मास पावर -1, लेंथ पावर -3, टी पावर +3, एम्पियर 2, तो बन रहा आंसर इसका। ओके, विच इज द करेक्ट वन, सो यस, तो ये भी गलत हो जाता है, मतलब ये भी फोर्स रिलेटेड, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, टेक डाउन। खाली फार्मूला लिख लेना तुम्हें, ये पूरा सॉल्व नहीं करना, अगर सॉल्व करे तो इट टेक्स मोर टाइम, सो ओनली राइट डाउन द फार्मूलास, रेजिस्टेंस का फार्मूला और वी का फार्मूला, ओके, देन रो का फार्मूला, देन रेजिस्टिविटी का, कंडक्टिविटी का फार्मूला, जो बॉक्स में लिखकर हूं देखो, खाली इतना लिखना सुन, बाकी के यू नो हाउ टू कन्वर्ट। Once you finish, tell me, we'll solve the next question. So electromotive force is like F equal to BLV sin theta. BLV, okay, electromotive force का फार्मूला F is equal to BLV का बोल पाता, because it is related to the magnetic field. Okay, तो यहाँ पर magnetic, यहाँ पर flux, unit of magnetic flux is with the right flux or Weber का बोल पाता unit, length और velocity। यहाँ पर देखो mass is नहीं है तुमने, यहाँ पर BLV, so B is for magnetic field, okay, unit of magnetic field is Tesla or Weber बोलते हैं इसे, okay। अब यहाँ पर L is length, B is velocity, okay, but तुम्हें एम्पियर भी नहीं बन रहा है, मास भी नहीं बन रहा है, बट इसमें ऑप्शन में नहीं चेक करना होगा, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, ओके। Over. So next question. If the dimension of resistance are same as of the dimension of resistance. Okay. So where is the dimension of resistance? Okay. So please you note down this. Okay. Okay, so this is the dimension of resistance.
ओके अब क्वेश्चन क्या पूछ कर ही बोले तो द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आर सेम एज ऑफ okay the dimension of resistance as are same as those of the dimensions of resistance okay the dimensions of resistance as same okay are same as those of where h is Planck's constant where h is Planck's constant where h is Planck's constant Planck's PLAN okay CKS Planck's is the scientist name okay so Planck's constant E is the charge E is the charge okay next question number 3 okay अब यहाँ पर क्या देंगे the dimension of resistance what is the resistance dimension resistance का dimension क्या था M L T A correct so M power minus 1 so this becomes लेंथ का डायमेंशन क्या था -2 और -3 -2 -3 +2 और -2 चेक करो m power 1 L2 okay t power -3 a power -2 okay so mass length time ampere क्या था इसका m power 1 L2 t power -3 -2 ओके तो ये आपको रेजिस्टेंस का डायमेंशन ओके अब जो ऑप्शन देकर ही उस ऑप्शन में इसका डायमेंशन सेम आ सकता है क्या बोल को कैलकुलेट करना सो ओके द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस आर सेम एज दोस ऑफ ओके वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड d इज द चार्ज ओके अब इसमें से ऑप्शन देखो ऑप्शन ए इज ओके h स्क्वायर बाय e स्क्वायर h स्क्वायर बाय e स्क्वायर ऑप्शन बी इज h square by e option c is h by e square option d is h by e अब ये जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन देकर ही ये चारों में से कौन सा बराबर है करो बोल को फाइंड आउट करना सो ओके सो हियर व्हाट इज h h का मतलब कि h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट ओके एक कांस्टेंट वैल्यू है एक फिक्स्ड वैल्यू एंड d का दिस क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई कर को बोलते हैं ओके अब ये फार्मूला में जो देकर ही अब ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है बोल को फाइंड आउट करना ओके सो फर्स्ट अब देखो चारों में भी h भी है और e भी है तो हमें h का भी डायमेंशन निकालना और e का भी डायमेंशन निकालना देन दोनों को भी डिवाइड करें तो विल गेट द आंसर ओके सो h का लाइक एक्चुअली वी हैव द फार्मूला e व्हिच इज इक्वल टू h न्यू बोलते हैं सो दिस इज द फार्मूला फॉर ओके मतलब जहां पर h आता है h का फार्मूला ये लिख सकती है हमें सो व्हाट इज h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट न्यू इज द फ्रीक्वेंसी अब ये फार्मूला हमें क्या बोलते हैं इसे लाइक वी कैन यूज दिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इज न्यू और वी कैन राइट फ्रीक्वेंसी ओके मतलब दोनों सिंबल्स हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड करेक्ट फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू भी बोल सकती और इसे हमें एफ भी बोल सकती इन डिफरेंट मेटेरियल डिफरेंट टेक्स्ट बुक दे गिवन द डिफरेंट सिंबल्स ओके अब कौन सा भी मानकर चलो इसमें से अब व्हाट इज द फार्मूला फॉर एनर्जी ओके सो एनर्जी ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ चार्ज तो एनर्जी ऑफ चार्ज का फार्मूला बनता है h इंटू न्यू अब इसमें से ओके अब हम होना हो गया h राइट तो h विच इज इक्वल टू e बाई ओके एफ लिख लेंगे बिकॉज तुम्हें फ्रीक्वेंसी बोले तो समझ में आ जाता तुम ओके इंस्टेड ऑफ आई एम यूजिंग द सिंबल आई कैन राइट एज फ्रीक्वेंसी तो h यहां से मिल गया व्हाट इज e e क्या हो सकता है e फॉर एलिफेंट व्हाट इज e व्हाट इज e e चार्ज कैपिटल E what is capital E here
आई एम आस्किंग कैपिटल ई, देखो स्मॉल ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, बट यहां पर क्या है, व्हाट इज कैपिटल ई? अभी ना बोलिया, जब ये फार्मूला लिखते समय बोलिया था ना, व्हाट इज ई, व्हाट इज ई, फिर भी वो बोल रही तुम्हें, ओके, एनर्जी, ई फॉर एनर्जी, ओके, सो इस एनर्जी को आई कैन राइट वर्क डन, एनर्जी को डब्ल्यू कर वो लिख सकते हैं, बिकॉज एनर्जी इज एबिलिटी टू वर्क, ओके, अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या बनता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला को रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ओके, सो हियर h which is equal to, okay, so work done, force into displacement divided by 1 by t, 1 by t को इसका रेसिप्रोकल t पावर -1 लिख सकते हो इसे। अब देखो यहाँ पर t पावर में डायमेंशन, t का डायमेंशन क्या है 1, यहाँ कुछ भी नंबर नहीं करके बोले तो इट इज अंडरस्टूड द वैल्यू इज 1, ओके, सो ये t पावर 1 का रेसिप्रोकल लिखना कर बोले तो t पावर -1 हो जाता है, हियर t पावर -1, okay, so h which is equal to what is force, mass into acceleration, so mass, acceleration is length, t power -2, correct, and here what is x is the displacement, so displacement is measured by length, so already one length is there, so can take 2, यहाँ पर t power -1 ऊपर लेकर है तो +1, तो ये -2 +1 is become -1, okay, so यहाँ से हम ना h की वैल्यू मिलकर है, डायमेंशन मिलकर आया, करेक्ट, तो व्हाट इज h डायमेंशन, m पावर 1 l पावर 2 t पावर -1, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन हुआ ये, ओके, अब इसमें और किसका डायमेंशन हमना, ओके, वी वांट, ओके, चार्ज, सो यहाँ पर वी हैव वन फार्मूला I which is equal to q by t, यहाँ पर q is the charge of electron, q बोले तो बेकिच, e बोले तो बेकिच, राइट, बट हमें चार्ज को कौन सा सिंबल यूज करें, q, बट चार्ज को हमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इतना बोलते सो, ओके, अब एटम लाइक एटम में कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स आर एग्जिस्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल चार्ज, electron and proton, electron is the negative charge and proton is the positive charge, okay, अब there are two types of charges, एक को positive charge, एक को negative charge, जो negative charge हमसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, ओके, अब इसे q आपको सिंबल, तो इसे तुम्हें q भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या बनता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर सेकंड में उस वायर में, उस कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसे हमें क्या बोलते हैं, वी कॉल एज इलेक्ट्रिक करंट, यू कैन राइट E by T बोले तो बेकिच, Q by T बोले तो बेकिच, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके, तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर को ही ना तुम ना, लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स स्टार्ट कर को ही तुम ना कॉलेज में, तो वहां पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q, चार्ज, ओके, तुम्हें Q बोले तो भी इलेक्ट्रॉनिक बोलते सो, और इलेक्ट्रॉन को बोले तो भी चार्जेस बोलते सो, दे बोथ आर सेम, ओके, एंड I equal to Q by T, so here we want E, अब E होना, so E which is equal to I into T, okay, so E which is equal to what is unit of current, एम्पियर और टाइम, तो यहाँ पर यहां से निकल कर आ रहा है E का फार्मूला, ओके, अब देखो, so we got this two answers, H और, because in all the formula H by E, H by E, H by E 600, जहां पर स्क्वायर आता स्क्वायर कर लियो, जहां पर स्क्वायर नहीं आता स्क्वायर करो ना को, so we'll get the answer, so first we can take this option A, okay, so option A, H square by E square, correct, H square by E square, इसका डायमेंशन लिखना, so what is H square, M square हो जाता है ये, देखो यहाँ स्क्वायर कर लेना, इसे स्क्वायर करे तो L पावर 4, इसे स्क्वायर करे तो T पावर -2, स्क्वायर का मतलब क्या, जो नंबर आते हैं उसे ऐड कर लेना, ओके, एंड E, सो A स्क्वायर और T स्क्वायर, ओके, अब यहां पर देखो T ऊपर गया तो माइनस प्लस T -2 हो जाता है, देखो ये जो 2 ऊपर गया तो -2 होता है, -4 आता है, बट यहां पर T की जगह -3 है, तो ये नहीं हो सकता, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इट्स नॉट ए करेक्ट वन, सेकंड देखो ऑप्शन बी, ओके, ऑप्शन बी में क्या आता है, H स्क्वायर बाई E, सो विच इज इक्वल टू M स्क्वायर L पावर 4 T पावर -2 डिवाइड बाई AT, ओके, ये ऊपर गया तो -1 -3 हो जाता है, बट एम्पियर पर -1 है, यहाँ -2 है, एम्पियर का डायमेंशन क्या है, -1, ये +1 ऊपर गया तो -1 हो जाता है, सो बी इज आल्सो इज द रॉन्ग ऑप्शन, तो बी भी सही नहीं है, ओके, थर्ड वन,
ओके सो थर्ड वन देखो, सो h by e स्क्वायर, h by e स्क्वायर, तो h का डायमेंशन क्या है? सो m पावर 1 l पावर 2 t पावर -1 डिवाइडेड बाय e, a पावर 1 t पावर 1, अच्छा स्क्वायर करना नहीं, तो a स्क्वायर t स्क्वायर। ओके तो यहां पर m पावर 1 l2, ओके t पावर +2 उधर गया तो t पावर -2, ये ऊपर गया तो -2, देखो ये सही होता है, सेम डायमेंशन, रेजिस्टेंस का डायमेंशन भी और c का डायमेंशन h बाई स्क्वायर का डायमेंशन सेम आ रहा है। क्वेश्चन में क्या देकर रही सो, ओके द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस आर सेम एज दोस ऑफ, ये फॉलोइंग ऑप्शन में कौन सा सही है, जो रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन और ये चारों ऑप्शन में से कौन सा उसे मैच कर रहा है। सो कौन सा डायमेंशन बन रहा है, h बाई ई स्क्वायर। ओके सो दिस द करेक्ट ऑप्शन, h बाई ई स्क्वायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। देखो ये दोनों भी सेम मारा ना, ये दिस ऑप्शन एंड दैट ऑप्शन दे बोथ आर करेक्ट। ओके राइट ओनली फार्मूलाज यू टेक डाउन, खाली फार्मूला लिख लियो। क्या मां करेक्ट करेक्ट -3, यस तो -3 करेक्ट है, यहाँ स्क्वायर है ऊपर का तो -3 बन जाता है। Once done, you let me, we'll go to the next question. Now we are coming. It's almost 6:30 और 40 minutes 50 minutes और क्या, अब बस हो, come and sit, sit here, यहाँ जाओ। Done? Last bench. Okay. So next question. बट ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते करते लाइक यू कैन एबल टू लर्न, ठीक है। तो कौन से भी लाइक डायमेंशन फार्मा से फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी से डायमेंशन फार्मा, मतलब समझ में आ गया तुम्हें कैसा सॉल्व करना बोल रहे हो। ओके सो ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन नीट के क्वेश्चन देकर ही हमें सॉल्व करे थे, नहीं कौन सा, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, कौन सा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको केसेट में 2006 में पूछ करते क्वेश्चन है, इट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जब जो सॉल्व करे थे नहीं ये 2010 में पूछ करते क्वेश्चन है, जो भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करे इट इज द प्रीवियस ईयर केसेट क्वेश्चंस। ओके नेक्स्ट वन, इफ L इज द इंडक्टेंस, ओके if L is a inductance, okay, I is the current in the circuit, I is the current, I is the current in the circuit, half Li square has a dimension of half Li square, half Li square is the dimension of, ओके अब देखो एक फार्मा है यहां पर, ओके सो ये फार्मा क्या बोलते हैं हमें, एनर्जी स्टोर इन ए इंडक्टर, व्हाट वी कॉल्ड एज एनर्जी stored in an inductor। ओके अब ये जो फार्मूला लिखकर ही नहीं, सो इंडक्टर U विच इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर। ओके जैसे कि लाइक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। ओके
सो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला बनता है हाफ mv स्क्वायर। ये फार्मूला और ये फार्मूला सिमिलर दिख रहा है। ये काइनेटिक एनर्जी, ये ओके एनर्जी स्टोर, मैग्नेटिक एनर्जी का फार्मूला ये काइनेटिक एनर्जी और ये मैग्नेटिक एनर्जी। यहाँ पर जो एल, ओके एल जो सिंबल है इट इज कॉल्ड एज इंडक्टर, लाइक यू विल स्टडी इन द मैग्नेटिज्म चैप्टर। सो चैप्टर नंबर 6 में स्टडी करती सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस करके बोल को, खाली तुम्हें ये फार्मूला याद रख लिया। ओके अब सिमिलर देखो, यहाँ पर मास आ रहा है, यहाँ पर एल आ रहा है, ओके यहाँ पर वी आ रहा है, यहाँ पर आई आ रहा है, बट द फार्मूला इज सेम। बट ये फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला और ये आपको ओके ये देखो ऐसा और एक फार्मूला बनता तुम ना, ओके पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, मतलब एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर। देखो ये भी सिमिलर दिख रहा है। दिस फार्मूला इज स्टडी इन द थर्ड चैप्टर, ओके सॉरी सेकंड चैप्टर, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, ओके हाफ CV स्क्वायर। देखो ये तीनों फार्मूले देख रही, तीनों भी क्या एनर्जी के फार्मूले चाहिए। ये कहां पर यूज करती है हमें, कैपेसिटर में, C फॉर कैपेसिटर, L फॉर इंडक्टर, दिस mv स्क्वायर फॉर काइनेटिक एनर्जी। ओके तो ये तीनों अलग अलग जगह हम इस्तेमाल करते हैं, बट ये तीनों भी कहां इस्तेमाल करें, सो दे ऑल आर रिप्रेजेंट फॉर एनर्जी। ओके ओके L इज द इंडक्टर इंडक्टेंस, I इज द करंट इन द सर्किट, हाफ Li स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ। ओके अब ये चार ऑप्शन में से कौन सा डायमेंशन का को पूछ रही है। ओके वर्क, पावर, प्रेशर, फोर्स। ओके ऑप्शन ए आपको वर्क, ओके बी पावर, ओके फोर्स, ओके एनर्जी, प्रेशर। ओके देखो ये चार ऑप्शन में ही, ये चार ऑप्शन में से जो हाफ Li स्क्वायर कर बोल को है, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, कौन से फिजिकल क्वांटिटी को हमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके आई टोल्ड यू ये तुझे तीनों भी किसका फार्मूला, ये एनर्जी का फार्मूला। अब ये फार्मूला में कौन सा एनर्जी के फॉर्म में दिख रहा है तुम ना, यस सो दिस द वर्क, बिकॉज लाइक एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ वर्क। ओके अब जैसे एग्जांपल, अब कुछ भी बॉडी क्या करनी है, हम यहाँ से ऊपर फेंक दी, सो वी हैव टू गिव सम वर्क डन, राइट। तो वर्क डन क्या हो जाता है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोरेज हो जाता है। लाइक इफ यू हैव ए स्प्रिंग, आगे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को कंप्रेस करो या स्ट्रेच करो। अब स्प्रिंग को कंप्रेस करो तो भी क्या करना पड़ता है, वी हैव टू अप्लाई फोर्स। ओके अब इमेजिन दिस द स्प्रिंग, इफ आई स्ट्रेच ए स्प्रिंग आई एम गिविंग ए फोर्स, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या बनता है, व्हाट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क। ओके अब स्प्रिंग में जो भी वर्क होता है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कौन सी एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो जैसे स्प्रिंग को तुम रिलीज कर दें, अगेन द स्प्रिंग इज कम बैक टू दैट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसमें जो भी एनर्जी स्पेंड हुआ वो एनर्जी क्या हो रहा है, फिर उस स्प्रिंग को वापस लेकर आने में उसकी एनर्जी खर्च हो जा रही है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर लाइक एनर्जी और वर्क दोनों भी सेम बनती। अब ये ऑप्शन में कौन सा सही बनता है, वर्क। ओके वर्क इज द लाइक इट इज वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क और एनर्जी का यूनिट क्या बनता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जॉल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, उसका भी जॉल। दोनों का भी यूनिट सेम है, बिकॉज एनर्जी और वर्क दोनों भी सिमिलर। ओके बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और प्रॉब्लम हमें क्या करते हैं, एनर्जी को वर्क को अलग अलग जगह डिफाइन करती है हमें। बट कंप्लीटली क्या हो रहा है अब, बिकॉज अब फैन चल रहा है, राइट अब इसमें क्या हो रहा है, फैन इज वर्किंग। अब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहने से इसमें वर्क कर रहा है, नहीं देखो वो फैन क्या हो रहा है, वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो है। अगर एनर्जी जीरो तो वर्क भी काम नहीं करता है। ओके कुछ भी बॉडी काम करने के लिए क्या होना पड़ता है, एनर्जी होना पड़ता है। ओके सो हियर एनर्जी एंड वर्क दे बोथ आर सेम। ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज वर्क। समझ में आया। नेक्स्ट okay, the dimension formula for Planck's constant is, okay, the dimension formula for Planck's constant, question number 5, the dimension formula for Planck's constant, what is Planck's constant, h। अब इसमें सॉल्व करें हमें। ओके अब ऑप्शन में क्या देकर रही, ओके व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला, m l square t power 2, ओके m l square t power -1, m l power -2 t power -3, m l power -2 t power -2। कौन सा बनता है, m l power 2 t -1। ओके
तो जो डायमेंशन h का जो डायमेंशन फार्मूला बनता है, ओके, सो मास, लेंथ और टाइम, ओके, सो मास 1, ओके, सो लेंथ 2 t power minus 1, ओके। यहाँ पर देखो ऑलरेडी वी सॉल्व दिस, ओके, यहाँ पर देखो m पावर 1 l पर 2 t पावर माइनस 1, तो क्या पूछ कर इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट का कौन सा डायमेंशन, ओके, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट इज, 4 ऑप्शन देकर थी तो उसमें से सेलेक्ट कर लेना तुम्हें। ओके, द मैग्नेटिक मोमेंट हैव डायमेंशन ऑफ, we'll go to the next slide. Okay, so the magnetic moment have dimension has, okay, l square a square, l square a square, l a, option C is l square t power minus 1 a, option D is l power 1 by 2 t power minus 1 by 2, तो ये ऑप्शन देखने से ये तो नहीं बन सकता, तो ऑलवेज नंबर क्या रहता तुमना, इधर 0 और इट कुड बी 1, डायमेंशन कभी भी जब डायमेंशन फॉर्म में लिखते हैं हमें क्या लिखना, सो इधर तुम्हारा डायमेंशन क्या रहता है, 0 1 2 3 4 में रहता है, कभी भी तुम ना फ्रैक्शन में और डेसिमल में डायमेंशन नहीं आता, सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। ओके, अब हमें क्या लाइक दे हैव गिवन मैग्नेटिक मोमेंट, ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्लोज द डोर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ को ही ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, very good, so electric dipole moment is p which is equal to q into 2a, okay, okay, a pair of two equal and opposite charges are separated by small distance, right, और इसे हमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या बनता है, p इक्वल टू q into 2a, ओके, तो यहाँ पर q कहते हैं क्या, चार्जेस, मतलब मैग्नेट ऑफ द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस का मैग्नेट इक्वल रहना और ये दोनों चार्जेस 2a के डिस्टेंस में रहना, तो उसका फार्मूला क्या बनता है, p इक्वल टू q into 2a, ओके। अब ये आपको कौन सा फार्मूला, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बट क्वेश्चन में क्या पूछ रही है, मैग्नेटिक मोमेंट, समझ में आ रहा है, ये आपको इलेक्ट्रिक मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ओके। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अब p के जगह m कर, व्हाट इज m, m इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विच इज इक्वल टू, अब यहाँ जो चार्ज है नहीं, चार्ज की जगह यहाँ करंट लिखना, यहाँ एरिया, यहाँ मतलब यहाँ डिस्टेंस की जगह a करके लिखना, दिस इज द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ओके। तो मैग्नेट किसके वजह से बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से, वेन एवर द करंट पासेस थ्रू ये वायर, ये कुछ भी, ये कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होने की वजह से क्या बनता है, उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू ये करंट, व्हाट इज माय पॉइंट। अब देखो दिस इज द वायर, अब ये वायर के अंदर से क्या हो रहा है, तुमना चार्जेस फ्लो हो रही, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से इसके आसपास क्या बन रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं इसे, द मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो ऑफ चार्जेस, इसमें चार्जेस फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, ओके। तो यहाँ पर क्या बनता है, दिस इज अ करंट, लाइक एग्जांपल आई कैन टेक अ वायर, समझो दिस इज द वायर, देखो अब यहाँ एक स्ट्रेट वायर ले रहा हूँ, इस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने की वजह से इसके आसपास क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ओके। अब वायर को मैं क्या करूँ, एक लूप के फॉर्म में बना लेता हूँ, सो ये आपको लाइक 1 डायमेंशन, ये आपको 2 डायमेंशन, अब ये स्ट्रेट वायर को दोनों एंड को ज्वाइन कर ले, क्या हो जाता है तुमना, व्हाट यू विल गेट, you will get a circular loop, right। अब देखो ये स्ट्रेट वायर, ये इमेजिन दिस इज अ स्ट्रेट वायर, अब इस स्ट्रेट वायर को अगर मैं इसे ज्वाइन कर, क्या बनता है, ये लूप, राइट, लूप का मतलब यहाँ पर क्या रहता है, मतलब पूरा ये कंप्लीटली क्या होता है, ज्वाइन होकर रहता है, मतलब बीच में ब्रेक नहीं होकर रहता है, ओके। अब इसका क्या, दिस इज एरिया, मतलब इसका थिकनेस, ये वायर का थिकनेस एरिया रहता है, और इसमें क्या चलता है, करंट, तो करंट इंटू एरिया कुछ क्या बोलते हैं समय, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, समझ में आ रहा है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या बनता है, I इंटू ए, सो नाउ वी हैव टू राइट द डायमेंशन, इसका डायमेंशन लिखो,
mass which is equal, what is I? Current. What is the unit of current? Ampere. Correct. And what is the unit of area? Length square, L square. ऑप्शन देखो कौन सा बन रहा है? ऑप्शन बी इज okay, L square A square. अच्छा, L square A. Wait. This last option has changed. Okay. So L square A. So this is the correct one. समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर कौन सा भी ऑप्शन, एक्चुअली ये दूसरे क्वेश्चन का मैं ऑप्शन लिख देता हूं यहाँ पर. ओके. अब कौन सा ऑप्शन मिल रहा है तुमने इसमें से? ये भी रॉन्ग होगा और ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा. दिस इज द करेक्ट वन. देखो कौन सा भी तुम्हें डायमेंशन फार्मूला लिखना अगर को बोले तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला याद रखना तुमने. जैसे कि लाइक प्लैंक्स कांस्टेंट का, फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, एनर्जी, पावर. ओके. और उसके बाद फोर्स, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जितने भी सारे फार्मूलाज बनते सारे फार्मूलाज तुमने याद रखना. अगर याद नहीं कर को बोले तो उससे हमें क्या कर सकते हैं? वी कैन कन्वर्ट इजीली एमएलटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर को. तो कौन सा सही ऑप्शन है वी कैन कैलकुलेट. ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ओके 7 होगा ये. विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. Dimension formula for universal gravitational constant. Dimensional formula for universal gravitational constant. Okay, so what is universal gravitational constant? Small g or capital G? Yes, capital G. Okay, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला लिखना है, मतलब डायमेंशन फार्मूला लिखना है. ओके, ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन. ओके, सो M L T. ऑप्शन बी इज option C is option D is okay. So इसमें 4 में से कौन सा ग्रेविटेशनल फार्मूला? हाउ यू सॉल्व दिस? कैसा सॉल्व करना इसे? हाउ टू सॉल्व दिस? मंजे आंसर बोलो इसका. ये 4 ऑप्शन में से यू पीपल हैव स्टडीड ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट पी में चैप्टर नंबर 7 पढ़ कोई नहीं. यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन फार्मूला. व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फार्मूला? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फार्मूला? F equal to G M का यहाँ लिखना सो यहाँ लिखना सार स्क्वायर. कूलम्स लॉ का फार्मूला पढ़ कोई फर्स्ट चैप्टर में. कूलम्स लॉ. व्हाट इज कूलम्स लॉ? The force is directly proportional to the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. नहीं, and the force is always acting on the line joining between the two charges. ठीक है. अब यहाँ पर देखो ग्रेविटेशनल फार्मूला भी कूलम्स लॉ का फार्मूला दोनों भी सिमिलर है. खाली क्या फर्क है करके बोले तो यहाँ पर हमें मास इस्तेमाल करते हैं, वहां पर चार्ज इस्तेमाल होता है. दैट्स इट. ओके, सो G M by R square. सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फार्मूला. कूलम फार्मूला क्या बनता है? ओके, यहाँ पर G के जगह क्या आता है? तो G is the gravitational constant. वहां पर K is the electrostatic constant. That is 9 into 10 of 9 or 1 by 4 pi epsilon naught आता है यहाँ पर. करेक्ट. तो यहाँ पर मास M1, मास M2. This is the earth mass, this is the object mass. वहां पर दोनों चार्जेस थे. Okay, so what is the difference between the electrostatic force and gravitational force? Electrostatic forces have both attractive force and repulsive force, but gravitational force is always attractive force. अब हमें ऑब्जेक्ट कुछ रहेगा तो क्या रिपल होकर बाहर चले जाता है? ये इज नॉट पॉसिबल, राइट? समझ में आ रहा है? अगर कुछ भी बॉडी रखने से क्या होता है? ऑलवेज अट्रैक्टेड टू द अर्थ. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैज बोथ attractive force as well as repulsive force. You know when is the condition?
कब वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, कब वो रिपल्सिव फोर्स होता है, इट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस. अगर दोनों चार्जेस प्लस प्लस रहे तो रिपल करता है, एक प्लस एक माइनस रहे तो अट्रैक्ट करता है. ओके, दैट इज रिकॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर हमें जी की वैल्यू कैलकुलेट करना. जी विच इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर एम स्क्वायर. करेक्ट. सो दिस इज द फार्मूला एंड टेल मी द आंसर. आई हैव गिवन द फार्मूला. इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, बिल्कुल कैलकुलेट करके बोलो. सॉल्व नो एंड टेल मी. coming for tuition class and not don't have a book. कल इसके देखते जब ऐसा कहीं नहीं देख रही, बच्चा नहीं आ रही, तीसरा अच्छा पढ़ा रही नहीं पढ़ा रही, देखना जब ऐसा नहीं. कैरी द बुक में कौन सी कॉलेज? चार्ल्स सेंट आंस. ओके, इसके पास लिंगाज कंप्लीट है. So got it? कौन सा? थर्ड वन. करेक्ट. तो दूसरा जो मिलेगा आंसर ना, फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशन mlt पावर -2. यहाँ r स्क्वायर होगा, लेंथ और r स्क्वायर l क्यूब होगा, l पावर 3 होगा. m स्क्वायर को ऊपर लेकर आए तो mm कैंसिल हो जाता है. फोर्स में एक मास आता है, नीचे स्क्वायर है, ऊपर का मास नीचे का स्क्वायर में कैंसिल होता है, तो मास ऊपर लेगा तो -1 हो जाता है. सो विच इज द सी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. सॉल्व करने की जरूरत है, यानी यू नो द आंसर, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. C and R denote capacity and resistance. If C and R denotes, what is C? Yes, capacitance or capacitor. What is R? Resistance. ठीक है, C का मतलब कैपेसिटेंस, R का मतलब रेजिस्टेंस. ओके, द डायमेंशन ऑफ C and R. The dimension of C and R मतलब मल्टीप्लीकेशन. सी आर, सी का तो कैपेसिटेंस, आर मतलब इसका डायमेंशन पूछ रही. ओके, अगर इसका डायमेंशन पूछ रही बोले तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, पहले कैपेसिटी का डायमेंशन निकालना, देन आर का डायमेंशन निकालना, दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हो, विल गेट द आंसर. व्हाट इज द फार्मूला फॉर सी कैपेसिटर? कैपेसिटर का फार्मूला क्या है? C इक्वल टू Q बाई V. ओके, so R is the resistance. What is the formula for resistance? V by I. Okay, दोनों को भी मल्टीप्लाई करो, उसका डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करो, you'll get the answer. Okay, options are, I'll write the option, you tell me. कैलकुलेट करके बोलो कौन सा सही आंसर इसमें. So which is the correct option? कौन सा सही ऑप्शन इसमें से? फार्मूला मालूम क्या? You know the formula for both resistor और capacitor. Okay, what is the formula for capacitor? Q by V. What is the formula for resistance? बात कैंसिल कर देंगे, V. या को क्या बनता है? वोल्टेज. ओके, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग, दोनों को भी मल्टीप्लाई करें. सो अब मल्टीप्लाई करें तो C इंटू आर विच इज इक्वल टू Q बाई V इंटू
V by I. सो कैंसिल करते व्हाट इज Q? चार्ज का मतलब I इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, करेक्ट? तो यहां पर भी I, तो कैंसिल करें तो T क्या बनता है? T पावर माइनस T पावर 1. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. देखो यहां पर खाली टी ना बच को है, सो ओनली टी इज रिमाइनिंग. तो सी आर में खाली क्या बच को है सुनना, टी एक ही बच को है, सो मास लेंथ 0. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. Okay. So next question number 10. Okay, solve करो तुम्हें. Represent the dimension of, okay, mass, length or time m per 1 t per 2 minus 3. Represent the dimension of, the dimensions of, okay, pressure. Option B energy. Option C power. Option D force. Okay, तो ये भी सॉल्व करो. ओके, तुम्हें सॉल्व करना से. to solve this, out of this 4 which is the correct option? किसका डायमेंशन है ये? Which is the dimension out of 4 option? Which is the dimension? What is the pressure formula? What is the formula for pressure? Rho GH. Rho GH किसा आता सो? ओके, प्रेशर इनसाइड या फ्लूइड. ओके, अब ये क्या, तो भी एक कंटेनर या वेजल रहता है, तो वेजल के पानी के अंदर डेप्थ में एक पॉइंट पर, तो प्रेशर कैलकुलेट करने के वास्ते रो जीएच वी आर यूजिंग. समझ में आ रहा है? सो वहां पर ये दिस इज ओनली प्रेशर. व्हाट इज द फार्मूला फॉर प्रेशर? प्रेशर का फार्मूला क्या बनता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, करेक्ट? देखो फार्मूलाज याद नहीं, बेसिक फार्मूलाज. सो प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स नहीं, लाइक यू पीपल हैव स्टडीड स्ट्रेस और स्ट्रेन के, इसमें पढ़ को रहती है तुम्हें ये. ओके, पास्कल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन, करेक्ट? लाइक यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, वो कॉन्सेप्ट में स्टडी कर को रहती है. तो इसका एनर्जी का फार्मूला क्या बनता है? वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. पावर का फार्मूला बनता है, सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन टू द टाइम टेकन. ओके, फोर्स फार्मूला क्या बनता है? F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, इसका डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करो, you'll get the answer. I've given the formula, substitute the MLT form, you'll get the answer. बोलो कौन सा आंसर सही है? Which one? Power. Work done to the time taken. Force into displacement, mass into IS. तो यहाँ पर तो power is the correct option. सॉल्व करना समय टिक कर को, तुम्हें भी टिक कर डालना नहीं. तुम्हें सॉल्व कर को, how you got the answer, you have to tell me. देखो यहाँ पर टाइम है, ओके, टी पावर -3. सो टी पावर -3 करके बोले तो ओके, फोर्स भी नहीं आता, वर्क डन भी नहीं आता. एक तो तुम्हारा प्रेशर नहीं तो पावर, दो में से कौन सा तो एक आता, बिकॉज टी पावर -3 है ना वहां पर. अब टी पावर -3 करके बोले तो
देखो फोर्स के जगह तुम ना फोर्स करो तो मास इंटू एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन बोलते टाइम पावर -2 आता। ओके और एक फोर्स कहाँ रहा तुम ना, और एक एक्सिलरेशन कहाँ रहा तुम ना, लास्ट ऑप्शन में अगेन वहां पर 2 आता है। तो वहां पर नेक्स्ट ऑप्शन देखो, वर्क डन टू द टाइम टेकन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स में मास इंटू एक्सिलरेशन -2 आ रहा है, ये भी माइनस 3 बार टाइम आ रहा तुम ना। ओके तो कौन सा सही ऑप्शन, सबको भी समझ में आया, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ओके डायमेंशन फार्मा फॉर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो। ओके नमाज को जाएगा, नमाज को जाएगा होते हैं 5-10 मिनट्स, कैलकुलेट दिस। ओके डायमेंशन फार्मा फॉर एंगुलर मोमेंटम, यू नो व्हाट इज एल, एल इज द एंगुलर मोमेंटम। ओके इसका डायमेंशन फार्मा कैलकुलेट करो। ओके डायमेंशन फार्मा फॉर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम या खाली मोमेंटम, फाइंड आउट द डायमेंशन फार्मा फॉर बोथ।
So what is the answer you got? MLT L2. Okay, इसका M1 P minus, इसका फॉर्मूला क्या था L का? Okay, so P into R. So L which is equal to MVR, correct? So angular momentum is the product of linear momentum into perpendicular distance. Okay, so P into R, P is the momentum, MV into R. और इतना क्या होता है इसमें T पर इसका velocity में एक बढ़ जाता है तुम्हारा. Correct. So whatever we discuss, you can go and revise. In next class, we'll be discussing about okay other topics, जैसे कि significant figures. Okay. So significant figures और कुछ other questions for solve करेंगे next class. Okay, continue next class.